NCDEX presents Commodity Ki Paathshala, powered by Moneycontrol. Hello and a very warm welcome to Commodity Ki Paathshala, brought to you by Moneycontrol and NCDEX IPF. Well, we are talking about today on the effectiveness of commodity derivatives as a hedge against weather risk. For the longest time, it has been about climate change, which has been making headlines, but now it's all about weather, especially the way this year started. First, in the month of March, we saw it as the hottest month with some days that were the hottest in last 122 years. And then there have been unseasonal rains and hailstorms. And it's difficult to differentiate on whether it's pre-monsoons or monsoons and what really are we looking forward to from here on. Having said that, it also is important to understand that this is what leads to changes in cropping patterns, in harvesting, and of course, the overall agriculture economy. And whether or not you should be looking at sowing the same thing going forward. There have been so many questions for farmers as well. And how do you mitigate all of those risks? There's a platform for that. How can you make use of that is exactly what we will talk in the program today. Joining me to take that discussion forward is Mr. Narendra Vadwa. He is National President at CPIA. Mr. Dilip Suthar is from Churar Farmer Producer Company. We also have with us Dr. K.S. Hasalikar. He's scientist and head IMD Pune. Mr. Sandeep Bajoria is CEO Sunwin Group, and Mr. Kapil Dev is from NCDEX. Gentlemen, thank you so much for joining us, and what an important discussion today it is, because we are looking at very erratic weather all across the place. And Dr. Hasalikar, no points for guessing. The first question has to be to you. What is it that we are looking at right now? Is this summer? Is this the kind of rains that we are looking at? And the kind of temperatures that we are looking at right now, I mean, they are much below normal. Delhi saw 20 degrees, which usually is 32, 33, even 34 during this time. So this 10 to 12 degrees of temperature, which is lower than the normal. How have you read 2023 until now? Yeah, thank you, Manisha, and greetings to all my expert member here who are in the panel. Yes, as a weatherman, yes, I'm also very curious about how will be the monsoon in the coming time, and when it will come to Kerala, when it will come to Andaman, when it will come to Kerala, and then when it will come to the mainland crossing the entire country. I'm really very anxious about it as much as you all are. And yes, the predictions are well placed in front of the entire audience by IMD on around mid of April, that what would be the state of monsoon as far as the entire country is concerned at all India level. And yes, you mentioned about a lot of weather happening around, especially in the northern part, central India. There has been rain, there has been severe thunderstorm, there have been number of occasions when the hailstorm also occurred. People are asking me when all this is going to stop and what is the reason. Of course, for everything there is a reason, and IMD comes out with that well in advance, that what is going to happen in the country's weather is concerned. And yes, when the heat wave started in the month of February, probably everyone started raising the eyebrows. अगर फरवरी में इतना बरसात है, सॉरी इतनी गर्मी है, तो मार्च और अप्रैल में क्या होगा, हमारी हालत क्या होगी, like that. And to the relief of them, March and April, probably April was the month where we saw a lot of rains in the most part of the country, except part of Kerala and some part of Northeast. Otherwise, most of the country received good rainfall, above normal rainfall. So April was good. Now May is looking, rain again there, and we are expecting some rainfall activity in the coming week also. The weather is really becoming dynamic and putting us on the edge, rather I should say. It's an acid test for the weatherman, and especially climate changes is sitting at one corner. Arlino is glaring at us, and the media and a very live and very active stakeholders and general public media, they are also expecting a lot of things from us. I'm sure we will be able to deliver it. But currently the situation is, we have said all the predictions are in place. The monsoon prediction, as far as the farmers are concerned, we have said that the monsoon 2023 in the first stage is expected to be normal
But this is a remember. I think I've been always telling to all my colleagues here, it is normal. When we say normal, means it is for the entire country. It is not for a particular state, or it is not for a particular region or particular place. In the second state, we will definitely will come out with some more details about it. Uh, I don't know how much time I have to speak in my first go, but whenever you want to stop me, you can always stop me so that we can have another question also, Manisha. As a Well, weatherman, absolutely. I cannot take I have a lot of we questions have also all your coming time, in. and And other I'm members. assuming not just me, all of these, my panelists also would have questions for you. I mean, you are one person who's most sought after right now. But I do want to ask you, as you said, in the month of April, the kind of rains that we have seen, how much do we normally see? I've read somewhere that 6 to 7 millimeters of a rain is what you usually see in monsoons, which we have seen in some days in the month of April as well. And then, yes, as media have been reading a lot, we also have read reports on how there is some cyclonic situation building up in Bay of Bengal. So this is all very near term. We talk about monsoons in some time. What is really happening right now? Now, if you see the April month record, probably it was one of the wettest month. And I was just today looking into my archives, and I found that especially I'm sitting in Pune, so I was looking after the Maharashtra record, and I found that from 1961, I tweeted it also. From 1961 onward, this is the highest rainfall that Maharashtra received. Almost 200% rainfall, 200% excess rainfall in Maharashtra, and especially the entire country has received. Yes, you rightly mentioned about there is a we are talking about some system getting developed into the Bay of Bengal, South Bay of Bengal, that, and probably it could lead to some cyclogenesis also. Will definitely will come out with more details about it, and this could give a lot of rainfall again in the parts of the southern peninsula and over the east coast. There could be a lot of rain. We'll come out with that. And for rest of the country, yes, northern India, we have, I mean, warnings are there, and probably after about 1 week or so, there is a chance of again the temperature rise before the monsoon coming into the picture. That is what the current overall scenario I can say. So when you say it's erratic monsoon, and there's a lot of heartburn when a weatherman says that. I'm assuming the rest of the commodity market then is clearly in a lot of disarray, as we know that. Do stay on with us, because I'm sure the panelists would want to ask you certain things as well. But Mr. Bajoria, the first question after Mr. Salikar comes to you. When we are looking at an erratic monsoon, erratic weather, let me put it like that, because monsoon is still some time away. The kind of weather that we've seen in the first quarter of this year, even now for that matter, and the month of May is also looking at some rains and hailstorms right now. Some of you are in Delhi, and you told us how it's raining in Delhi right now. So when you look at an erratic weather condition, what is your sense on how it impacts the agriculture in sense of production, demand, and supply? Manisha, practically in Kharif, in oilseed, three states are very important for us. The one is Gujarat for groundnut, secondly Maharashtra for soybean and cotton, and Madhya Pradesh again for soybean. So, as Dr. Hosalekar had said, that normal monsoon, all India basis. But then, as far as oilseed is concerned, these states are very important in Kharif. So, we are more anxious how the monsoon activity is going to be in these three states, because in 85% of 80% of the Kharif production comes from these three states. So, we are very anxious, and with the El Nino talk being going on all over, we don't know what kind of crops are going to be there. However, world is flush with vegetable oils, and we have enough oil in the world. So there is no actual anxiety from the point of view of supply or the consumer. If our production is less, we can import it more. But however, we want our factories and oil mills and solvent extraction plants who are seed crushing here to run. So that's why it's very important for us to have some good rainfall in these three states. So we are anxiously watching that. But I have my hunch that whenever these El Nino things are there, and see, one is the overall rainfall, state-wise rainfall, and secondly, within all the 4 months, how the Am I distribution of audible? rain. Yeah. So that is also important. So June, July, if there is some rain, but if August, September is deficient, again the productivity and the yield hampers. So we are keeping our fingers crossed and watching the situation.
And I would like to know from the doctor what he thinks about the rainfall in Maharashtra, Madhya Pradesh, and Gujarat. I think I was muted. So is it okay now? Am I audible? Yes, 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 yes. Dr. Hasalikar, you are audible now. And as Mr. Bajoria was putting that question across to you on what is Yeah. the next 4 months looking like. I mean, even before IMD starts talking about on what the rainfall is going to be, the whole world is, or rather, the whole country has already made decisions about it. Yeah, because what is happening? No, I mean, it's not only IMD who talks about the weather. There are many other agencies, even the weather enthusiasts, and even there are many other international agencies like ECMWF, Japan Meteorological Office, WMO, so many other agencies, international agencies. They keep watch on this beautiful system which comes every year for maybe a couple of lakhs of years back. Every June it will come, and somewhere around August to September or maybe October it will go. So everyone is keeping watch, and everyone has their scientific contribution, and definitely we assimilate that also into it. We have said that monsoon will be normal. Last year also we said monsoon will be normal. It was La Nina. La Nina favors the Indian summer monsoon. So last 3 years it was a triple dip La Nina. Last 3 years were La Nina, so it was favorable. This year, probably there are shadows of El Nino, that is, warming of the equatorial Pacific Ocean, and it has a reputation that it can spoil sometimes, or it can impact the Indian summer monsoon also. But there is a ray of hope also here. I mean, what is that? That every time El Nino was there, the monsoon was not bad. It is not like that. So it is not 1 to 1. So this is one good chance. And secondly, this teleconnection, there are 3-4 teleconnections. One is El Nino. Second, is Indian Ocean dipole that happens in the Indian Ocean. And third, is the Eurasian or Northern Hemisphere snow cover. So this Indian Ocean dipole and North Hemisphere snow cover, they are favoring, the model guidance, that long range forecast guidance. So out of three, if one is still, we are telling that it may occur in the latter part of the monsoon, but the other two, IOD and the snow cover, are still in favor. So we have to just wait for a little more conditions, little more closer outlook to that. But before we give that, when the second stage, Manisha, I want to give you, maybe around 15th of May, we will tell when the monsoon will arrive in Kerala. So that is also one news that before that we will give it to all our, all our stakeholders and all our people who read about the weather and the weather data. Yeah, please. Yeah, Dr. Hasalikar, I can assure you that it's not just the agriculture people, but most of the economic indicators as well coming from monsoon, because much of the India is still rain-fed. So that is something that is keenly watched out for. But Kapil, this question is to you, and every year is different. And as Dr. Hasalikar said, it's going to be very dynamic. It has been very dynamic as well. So when you, as a major platform for agri commodities derivatives there, what is it that you see changes when it comes to cropping patterns, when it comes to agri commodities being traded, people and various stakeholders making use of that platform or the exchange? Yes, thank you, Manisha, and good evening, everyone. I think being in agri exchange, we follow monsoon very closely. सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि ये उन कम्युनिटीज को इम्पैक्ट करता है जहां पर प्राइस ट्रेड होते हैं, बट इस वजह से भी क्योंकि ये पूरे इकोसिस्टम को इम्पैक्ट करता है, जो ट्रेड करते हैं, जो ट्रेड नहीं करते हैं, जो कमोडिटीज हमारे यहाँ ट्रेड हो रही है या नहीं हो रही है. व्हाट वी हैव सीन हिस्टोरिकली, मनीषा, अगर हम लास्ट 10 साल का डेटा देखेंगे, बजोरिया जी भी बोल रहे थे कि जब भी इस तरह का वेरिएशन वेदर में होता है, 4%, 5%, 94, 96% kind of range, especially year like 2014 and 15, we have seen a significant impact on the production, especially oil seeds. We have seen a dip of maybe 13% and 14% in 2 consecutive years, and in range of 3 to 4% in all other cereals and pulses. And in a country which is very tight in terms of demand and supply, we don't sit on huge stocks of oil seeds or pulses. It creates a lot of trouble. So that we have definitely seen, and even those small 3-4% deviation, we have seen pulses prices skyrocketing in 2015 and 16. We have seen that in 2011, 12, and maybe in 7, 8 as well. So impact of even a small shift is huge.
which creates a lot of challenge to the ecosystem and especially all the consumer and the processor of those commodities. So that's why we are always in a view कि there has to be a mechanism to manage the risk which is generated through derivatives market, through the weather, and derivatives market are a very efficient tool for that. Globally there are derivatives on weather itself. तो अगर आप यूएस मार्केट में जाएंगे या अदर कुछ डेवलप्ड मार्केट में देखेंगे तो आपको दिखेंगे कि जो भी डेरिवेटिव वेदर के पैरामीटर उनके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो टेम्परेचर है या कोल्ड डेज हैं या हॉट डेज हैं, उसके ऊपर उन्होंने डेरिवेटिव्स डिफाइन किए हुए हैं और उन डेरिवेटिव्स को ट्रेड करते हैं। क्योंकि डेरिवेटिव सिर्फ एग्रीकल्चर इकोसिस्टम को इम्पैक्ट नहीं करते हैं, आई थिंक बादवा जी डेफिनेटली विल स्पीक ऑन दैट कि ये पूरे फाइनेंशियल इकोसिस्टम को, सारी इंडस्ट्रीज को, कंजम्पशन को, ऐसी इंडस्ट्रीज की अभी हम बात कर रहे थे कि 2 दिन में आई थिंक ऑल देयर डिमांड सप्लाई प्रोजेक्शन विल बी चेंजिंग इन नेक्स्ट 2-3 डेज। सो हमारा व्यू ये है कि जो वेदर का प्रोडिक्शन जो हौसलेकर साहब ने बोला या बाकी जो एजेंसीज करती हैं, and which is now very very efficient, we can really make sense, we can be more confident कि इस तरह का prediction है, इस तरह की forecasting है, which has remained now very close to the actual remain very close to forecast. It is important how to manage the risk. So there are two sides of it. Can I know the weather? Can I predict the weather? Yes. Now with lot more technology available, you can do that. But what after I know the risk? So if I know that whether maybe monsoon may be the shortfall in the monsoon, बारिश कम पड़ सकती है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो सकता है या टेम्परेचर कम हो सकता है, if I as an industry, as an individual or as any entity feel there is a risk to my business, how can I mitigate that risk using derivatives market? And we think there has to be a mechanism to manage that risk. So maybe in second part I will speak little more on this, Manisha. Well, absolutely. As said कि सभी economic जो parameters हैं वहाँ पर उसको monsoon इसको छूता है, and we being an agrarian economy, even as that manforce has been declining there, even then the numbers are quite huge there. Mr. Wadhwa, आप कैसे देखते हैं इसे, various economic indicators कैसे इससे impact होते हैं as of now from where you are, चाहे वो agriculture है, चाहे आपके financial markets हैं, चाहे वो economic indicators हैं, क्या sense या क्या view आप बना रहे हैं? Mr. Wadhwa, this question is to you. We can't hear you. Mr. Wadhwa, can you hear me? Thank you, Manisha ji, and thanks to NCD having this Ki Paathshala. Am I audible? Yes, you are. Yes. Okay. So this is a nice program for educating the value chain participants and all participants about the derivative markets and the various inputs which are required for a healthy commodity as well as financial market. And it was nice to hear from the weatherman, Dr. Hosaleker, that we are going to have a normal monsoon this year. A country of our size, always look for monsoon, as it is very important for us, which determines the total market of India. 50% our population is on agriculture or rural economy, and all of us look for normal condition, which if it is not there, if it is a normal monsoon, then definitely it impacts the employment, it affects the disposable income, and so is the demand in our market. And if it is not there, then we are all worried, not only in the commodities market, otherwise in the stock market also, financial market also, we take a note of it, and our markets react on that. So very important tool, as Kapil ji has just mentioned. In other jurisdiction, there are weather contracts also, which are very important tools used by the agriculturists, farmers, and the other value chain participants. So it is also being discussed in CDEC committee. I am part of CDEC committee, that we should also have weather contract to take note of the monsoon, and it's the weathers are changing.
The climate is totally changing, and we have erratic seasons. Like we were seeing in Delhi, we are week, there are continuous rains, which we have never and which are sector as well as the commodity. We will have it financial impact of various inputs like monsoons to hedge themselves. The farmers can freeze their production, the price of their production. So is the value chains. So going forward, I think in the second phase also, I'll speak about this more. Thank you. श्योर दिलीप जी, अब ये सवाल आपसे है और आप वो स्टेक होल्डर हैं जो क्लियरली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको वेदर एकदम डायरेक्टली यहाँ पर इम्पैक्ट करता है। कैसे देखी हैं आपने वेदर कंडीशंस और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे इसका क्या इम्पैक्ट आपने आता हुआ देखा? जी नमस्ते मैम, नमस्ते एवरीबॉडी। वेदर तो ऐसे फार्मरों के लिए सबके लिए नुकसानदायक ही रहता है जब भी आता है, पर अभी एफपीओ के माध्यम से थोड़ा थोड़ा हम लोग उनका रिस्क कम कर रहे हैं। ठीक है, उसमें डेरिवेटिव एक्सचेंज है, वो फायदे से ऐसे है कि हमारे यहाँ जो भी किसान प्रोडक्शन लेते हैं उसमें से आधा तो जब भी निकलता है उसी टाइम पे मार्केट में सेल करना पड़ता है। जो उनके पास बचता है वो सभी फार्मर मिलके एफपीओ के डीमेट अकाउंट में डिपॉजिट कर देते हैं, तो उनका क्रॉप एक हिसाब से सेफ हो गया कि भाई एनसीडीएक्स के वेयरहाउस में उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया। फिर हर रोज जब भी मार्केट देखते हैं उनको उनका वैल्यूएबल रेट मिलता है, उसी टाइम पे वो लोग सेल करते हैं। तो उस बीच में जो भी बारिश वगैरह आते हैं तो उनका रिस्क है वो निकल जाता है। फ्यूचर में वेदर की वजह से बचने के लिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी हमारे कई कई फार्मर एफपीओ के थ्रू साइन करते हैं। तो मान लीजिए अभी क्यूमेन का सोइंग हो रहा है, तो फ्यूचर में जैसे कि अप्रैल है, मई है, तो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, तो उस वजह से जो भी बीच में थोड़ा बहुत रिस्क रहता है वो रिस्क उनका निकल जाता है। हमारे यहाँ कभी कभार बारिश ज़्यादा हो जाती है, कभी कभार कम हो जाती है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो उनके घर में जो भी माल वगैरह रहता है वो पूरा भीग जाता है, तो उस वजह से नुकसान ज़्यादा रहता है। अभी जो फार्मर यूज़ कर रहे हैं कि भी एफपीओ के डीमेट अकाउंट में अपना पूरा का पूरा माल डिपॉजिट कर दीजिए, उसके बाद वो यहाँ से माल के ऊपर से एकदम सेफ हो जाते हैं कि कितना भी बारिश आए या बाढ़ आए तो माल को नुकसान नहीं होता है, और जब भी उनको सेल करना है वो अपने हिसाब से सेल कर पाते हैं। दिलीप जी, आप कहेंगे ज्यादातर किसान, आपने अपने एफपीओ का यहाँ पर हमें एग्जांपल दिया, जिस तरह का मौसम है कभी भी यहाँ पर एकदम से बदल सकता है, तो क्या इतने जागरूक हैं किसान आप एज एन एफपीओ की इमीडिएटली यहाँ पर कॉल्स या डिसीजंस ले सकें और प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकें? जी मैम, हम लोगों ने शुरू से ही एनसीडीएक्स, उनके वेयर हाउसेस वगैरह, उनकी जो सेवाएं हैं उनको हम फार्मर तक ले गए हैं। ठीक है, तो उनको एग्जैक्टली जो फार्मर है उनको मालूम है कि घर पे जो माल रखना है उसकी जगह पे वो वहाँ सेफ हो जाएगा, उसका इंश्योरेंस वगैरह भी होता है, तो कभी भी कोई इश्यू आ नहीं सकता है। तो उस वजह से उनका क्रॉप एक जगह पे सेफ हो जाएगा। बाद में उनको जब भी सेल करना है तो किसी को पूछना नहीं पड़ता है, जब अपना रेट उनको मिल गया उसी टाइम पे वो फिर एफपीओ के थ्रू सेल कर देते हैं, तो उनका रिस्क कम हो जाता है। आई एम श्योर दिलीप जी, काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो एक एफपीओ यहाँ पर ध्यान रखता है जब वो अपना सामान डीमैट में लेके जाते हैं या फिर एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं। और मौसम भी पहले होता था कि हाँ ठीक है, ये 4 महीने बारिश है, ये अब मौसम ऐसा है, ये एक मंथली वहां पर एक सेट पैटर्न था जो हमने इस बार टोटली ब्रेक होता हुआ देखा है। जिस तरह से फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने गए हैं जो बहुत ही डिफरेंट है, जो कि जैसे डॉक्टर सालेकर भी कह रहे थे कि बहुत सालों में ऐसा देखने को ही नहीं मिला, और सभी लोग काफी अम्यूज्ड हैं यहाँ पर। इस समय में आपने कैसे यहाँ पर एक्सचेंज का यहाँ पर यूज किया है? हम लोगों ने जैसे किया था, हमारा लास्ट ईयर का एक एग्जांपल है कि तकरीबन 150 फार्मर लोगों का क्यूमेन एग्रीगेशन करके उसका एनसीडीएक्स का क्वालिटी पैरामीटर सब बना के सीधा माल डिपॉजिट किया। वहां से फिर बारिश हुआ तो जिन जिन फार्मर लोगों का हमने वहां माल रखा था, ठीक है, उन्होंने वहां होल्ड रखा था, तो घर पे कोई इश्यू नहीं हुआ। फिर वही माल को हम लोगों ने हेजिंग करवाया,
तो धीरे धीरे 2, 3, 2.5 महीने तक हेज करके रखा, बाद में उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिला जो एफपीओ उनको दे पाया। ये डेरिवेटिव का हम लोगों ने वहां पे उपयोग एक अच्छे तरीके से किया और फार्मरों को इनका सीधा फायदा पहुंचा पाए। वंडरफुल। डॉक्टर इसालीकर, आई नो आईएमडी सिर्फ यहाँ पर मौसम ही नहीं बताता, या आपका एक आईएमडी की ब्रांचेस भी हैं जहाँ पर फार्मर्स के लिए और वेरियस अदर सेक्टर्स पैरामीटर्स के हिसाब से भी यहाँ पर वेदर फोरकास्ट की जाती है, स्पेशली फॉर फार्मर्स। यहाँ पर जिस तरह की बेरिंग उनके लिए यहाँ पर वेदर को लेके होती है, सबसे ज्यादा बड़ी मार इनको यहाँ पर पड़ती है। सो एज आईएमडी एज ऑफ नाउ यहाँ पर किस तरह के टूल्स हैं जो फार्मर्स यूज कर सकते हैं? थैंक यू। एक्चुअली मैं दो बातों का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। एक तो जो मौसम विभाग जो जानकारी देती है ब्रॉडली, इट इज़ फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स कि किस तरह से आने वाले 5 दिन में मौसम रहेगा और किस तरह से सीवियर वेदर इफेक्ट करने की संभावना है। वी स्टार्टेड इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग ऑल्सो, मतलब कितनी बरसात होगी और उसका क्या प्रभाव रहेगा अलग अलग स्तर पर, वो भी हम यहाँ पर लोगों को बताते हैं। ये हो गया आमतौर पे इन जनरल बताते हैं, बट एज फार एज कृषि जो है हमारा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर है, वहाँ पे हम लोग नाउ वी हैव स्टार्टेड गिविंग द फोरकास्ट एट द ब्लॉक लेवल आल्सो, एंड देयर आर अबाउट 7,500 ब्लॉक्स इन द कंट्री। और पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करते थे, जिला स्तरीय पे, लेकिन फार्मर का ये कहना था कि बहुत सारे जिले बड़े हैं, वी नीड टू डेवलप इट ऑन द ब्लॉक लेवल, सो वी स्टार्टेड डूइंग दैट, एंड we are getting good feedback from the farmer, and this is a 5 to 7 day forecast, and it is updated every Tuesday and every Friday. So around 11 to 12 parameters which are there. I will talk about, if given an opportunity, I will talk about the uncertainty which some of my colleagues were mentioning. I think with the type of weather that we are seeing, I mean, if we are still thinking, if I am still thinking that probably climate change is still far away, it's not for me, it's for somebody else, then probably I think I'm reading it not correctly. I think it is currently it is happening, and we are seeing a lot of echoes of that. So what we need to have, we need to have the of course IMD will give all the predictions, but many times, as one of the gentlemen said that, yeah, prediction they diya, but what are the plans that we have to protect it? So we need to have the contingent plan also. So, for example, today morning I was seeing some of the statistics. I found that there are many states in our country, I mean more than 20, around 18 to 20 states are there who have, the irrigation, the irrigation method, that just not rain fed. So, like more than 50%, I'll put them in that category. That many states, of course, the states like Haryana and Punjab, they are, the gold medal and silver medal in that list. But many other states are, around more than 50. But still, the point of worry is there are many states who have this type of irrigation covered land less than 50. Some of them are 20%, some of them are 10%, etc. Probably, this we need to look into it. So, in case there is some difficulty or some variation in monsoon during the 4 months, then definitely we need to have this type of contingent arrangement, backup arrangement, that by chance अगर rainfall किसी वजह से कम ज़्यादा होता है at a given stage, then we must have this type of contingent plan. Second is, the whether the onset is in time or whether it is delayed. If it is in time, then there is no issue. If it is delayed, then probably we need to have, a alternate crops, which can, by which, the time period will be less. So this needs to be not only planned, but even the farmers are need to be taken in confidence that अगर ऐसा होता है तो इस तरह से हम लोग काम करेंगे, तो इस तरह से हैंड होल्डिंग करना जरूरी है। ये हो गया ऑनसेट के टाइम। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द एंटायर सीजन, तो मानसून जो है, मतलब ऐसे मैं कई बार लोगों को मजाक में कहता हूँ कि मानसून मतलब ये नहीं कि जून में हमने टैप खोल दिया और सितंबर में उसको बंद करेंगे, ऐसे नहीं होता है। एट मेनी प्लेसेस द रेनफॉल शोज लॉट ऑफ वेरिएबिलिटी, एंड वी ऑल नो दैट. So in that case, if that sort of lesser rainfall or subdued rainfall activity continues, 3 times of the season, one is in the beginning, second is in the mid, and third is in the last. So third is in the last, monsoon is over, then why we should worry? But then, we have the Rabi season also, the winter crops. So for that, there is a contingency plan we need to have.
मानसून अच्छा हो गया इसका मतलब ये नहीं कि रबी क्रॉप्स को हम छोड़ देंगे. Then what about the beginning when the farmers see the rain and they start sowing, and then they found that the बरसात अचानक गायब हो गई उनके यहाँ पे. Then there is a chance that जो उन्होंने बोया है वो खराब हो सकता है. There could be a chance of the second or third round of sowing also. So at that time probably they need to have this type of handholding where the infrastructure, the logistic and the economy should help them to have the second round of sowing. But this requires a lot of money. Our country, other than the major states, I think the correct numbers I may not be having, but the जिसको हम कहते हैं अल्प भूधारक, people who are holding a very small piece of land, not like 200 and 300 hectares. But these type of farmers, they suffer a lot, especially with the intrinsic variability in the climate. And when it happens during the एक्टिव सीजन, मानसून के बीच में अचानक ऐसे कई बार होता है कि मानसून में खंड पड़ जाता है, यानी यू सी द ब्रेक इन द मानसून. दैट इज ऑल्सो वेल डिफाइंड एंड इट कैन बी वेल प्रेडिक्टेड ऑल्सो. एटलीस्ट 15 to 20 days पहले इसको एडवांस में बताया जा सकता है कि आने वाले 15 दिन में मानसून जो है सबड्यूड हो सकता है या कम हो सकता है. अब उसके बाद ये होता है कि जब हम कहते हैं तो देन फार्मर शुड हैव अ कंटीजेंसी प्लान ऑल्सो, मनीषा, दैट दे मस्ट हैव सम इरिगेशन मेथड बाय व्हिच दे कैन सेव देयर crops. If they cannot save, then probably whatever they have sown and it has come to the flowering stage, they can have a lot of difficulties. So this needs to be taken care. We just cannot depend only on the rain which will come from the top, though it brings almost 85% of the entire rainfall of the requirement of the country. But in the climate change scenario, probably it's a time to look at the other alternatives also. Given an opportunity, I will talk about the GVA also, that is gross value added sometimes whenever if the opportunity comes. Yeah, thank you. All right, Mr. Bajoria, ये क्वेश्चन आपसे है. I remember जब हम ऑन द चैनल ऑन मीडिया ये सब बातें करते हैं कि हाँ पहली बारिश हो गई, सोइंग शुरू हो गई है, कितनी सोइंग हुई है, वो गवर्नमेंट के डेटास भी आते रहते हैं, हम इंडस्ट्री से भी लेते रहते हैं, फिर बारिश नहीं हुई, कितनी रीसोइंग हुई. आई थिंक जैसे डॉक्टर सालिकर ने कहा, इट्स लाइक अ 4-month लॉन्ग पीरियड फॉर अस, स्पेशली ड्यूरिंग मानसून्स. एंड रबी में हम उसको फिर रिपीट करते हैं, बट मानसून्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बिकॉज द वेदर इज एन एडेड advantage and sometimes an uncertainty as well as we move into this. So, Mr. Bajoria, how would you look at the weather uncertainty and the way the exchange platform has been able to make that uncertainty a hedgeable proposition? If somebody wanted to have a wedding in rainy season, he would have insight. But nowadays, it's risky to have a wedding even in December and March and April outside because it can rain anytime. So I think the weather derivatives have become very, very important, and overall situation is very flux, as doctor said, that we don't know when it's going to rain, when it's not going to rain. So we have to, climate change is there and we have to realize it. So it's no more a plain vanilla ice cream. It is like a combination of everything now. So with this, I believe to manage our risk has become very, very important and very difficult as well. So I think all the commodities which are produced by farmers in India must have their commodity derivatives. The exchanges must be having a trading platform for all the commodities. We are not having this in oilseeds and oil since last 1.5 years, and we are really handicapped. We cannot compete with international players because they have all the available Dalian in China, Seabot in US, the Malaysian derivative exchange in Malaysia. While Indian players are, and India being the largest importer of veg oil in the world, and we are not having this derivative. So Indian players, the importers, the refiners, the processors are at mercy of price variations and very, very high fluctuations, and this erodes their financial viability. And even our friend from FPO said that cumins are being, but farmers in oilseed, the FPO and oilseeds are really at a disadvantage. So we must have the commodity derivatives in every commodity which Indian farmer is producing in order to help every stakeholder to mitigate his risk. And especially it's time to come that we must have a weather related contracts also. That also will give a little more accurate information to government also, that what is the exchange showing about weather.
because there are now IMD is doing excellent job. There's no doubt about it. And IMD, as the doctor rightly said, 7,500 blocks wise information they have started giving. I think that was a need of our. So that's we're going to be very important that we not only give a macro picture of all over India, we give a micro picture on the block level also. So congratulations to doctor and IMD for this. And I think now, like today, any doctor, if you go and you tell what ailment and he prescribes you, the patient goes on talking to him, doctor, after reading all the knowledge from Google. And then doctor said, if you have know so much from Google, then why you come to me? So same way in weather now, there is so much of websites and so many people giving different bulletins out. So world over, so it's become very competitive and very different situation right now. So one doesn't know whom to believe and whom not to. So I think in such a situation, if whether derivatives there where people have to put their money to take a position, people are more responsible when they talk. So I believe it's a time that we must have a weather derivative in India, and earlier the better. It's very important. All right, Kapil, what do you have to say to that? The doctor is here, the conversation is ongoing, and even as, yes, we're talking about hedging commodities and agriculture on the platform, but weather derivatives clearly the need of the hour. नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट मनीषा. देखिए, मैं पार्ट 2 में रिस्पॉन्स दूंगा इसका. एक जो अभी है हमारे पास, सो जब हमने अभी बात की अगर वेदर कम होते हैं तो किस तरीके से क्रॉप का प्रोडक्शन कम हो जाता है. बट अगर आप उसके सब्सिक्वेंट ईयर देखेंगे जब वेदर नॉर्मल हुआ है, लाइक 2016, ऑयल सीड प्रोडक्शन वाज अप एज हाई एज 28%. सो जो फार्मर ने शायद सोइंग की होगी लास्ट ईयर के प्राइस को देख के, बिकॉज ऑफ गुड वेदर कंडीशंस, their prices were down absolutely because numbers were so high, production numbers. So it give a protection if they are using put options या futures के थ्रू वो hedge करते हैं. तो वेदर का अगर बहुत अच्छा हो रहा है तो वो उसको मैनेज कर सकते हैं कि इन एक्सपेक्टेशन की वेदर नॉर्मल है, crop production will be good, supply will be higher, prices may go down, which usually happens in a normal situation, they can protect. Now come to the another side, if weather is less or short है, so we know there is a lot of risk of inflation, especially consumer industry या जो processors हैं हमारी commodities के exporter हैं, they know that, or even the government, they know कि short supply रहने वाला है, prices may go up, there will be various kind of concerns, they can start hedging their commodities. जैसा कि अभी बजोरिया जी ने बोला है कि अगर हमें पता है कि wheat में because of temperature impact yield is down by 20% or 10%, and that will impact overall production, tight supply, we as a country and every value chain participants can manage those risks very efficiently. So that's part 1, that existing derivatives tools which directly give you an opportunity as a producer, consumer, or a processor of commodities. Part 2 is what you are saying. We all know that weather is not only an event, there is already a huge market for weather trading. It's in India as well, informal market. And weather is a commodity because it impacts everything we see from now. It is started in Feb. Every fortnightly there are various kind of production. हौसलीकर जो बोलते हैं उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्शन आते हैं, मंदिर से भी प्रोडक्शन आते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ मैकेनिज्म वी हैव इनफॉर्मल टू प्रेडिक्ट, पंचांग से भी वेदर के प्रोडक्शन आते हैं. और उसके बाद जो ट्रेडिंग का सेंटीमेंट है वो पूरा धीरे धीरे चेंज होने लगता है जब तक हम एक्चुअल इवेंट नहीं देखते हैं वो जो होता है. तो वो जो उस पूरे इस प्रोसेस से इम्पेक्टेड है, वेदर जिस दिन फोरकास्ट आईएमडी करता है या स्काईमेट करता है या जो भी एजेंसीज है वो करती हैं, उस दिन मार्केट बहुत ही सीरियसली देख रहा होता है कि किस तरह की फोरकास्ट आने वाली है, चाहे वो निफ्टी हो, चाहे वो सेंसेक्स हो, या एनी अदर इंडिकेटर हो, चाहे वो आरबीआई की पॉलिसीज हो, सब इसको बड़ा सीरियसली देख रहे होते हैं. तो इट्स नॉट लाइक एन न्यूज, इट इज समथिंग व्हिच विल इम्पैक्ट ऑल द पॉलिसीज गोइंग फॉरवर्ड, all the consumption going forward, all the production and sentiments as well as a country. So I think we definitely need derivatives. अगर हमें पता है कि inflation के concern हो सकते हैं, as a white good industry मेरे को पता है कि weather अच्छा है या temperature कम हो सकता है May में all of sudden, so they definitely need to have some financial mechanisms to mitigate their financial risk. I know the information, I know the predictions, I know their accuracy over a period of time, but I do not know how to manage it. Like even the insurance companies, every year we see Chennai, Bangalore, Delhi, Mumbai, there are floods, a lot of things are destroyed, and insurance companies are struggling post that.
they definitely need to have those kind of mechanisms where financial risk arising out of weather can be managed. Thankfully, जैसा कि बादवा जी ने बोला, we are in a very advanced stage of discussion कि हमें as a country we need weather derivatives, and not only for agriculture, for everyone, ताकि जो हमारे पास वेदर की इतनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आज के तारीख में है उसको यूज करके हम अपने फाइनेंशियल रिस्क को कवर कर सकें। वेल एब्सोल्युटली, जैसे कहा आपने कपिल की, सिर्फ फसल ही नहीं, चाहे वो जीडीपी नंबर्स हैं, इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ बाइंग है, हमारे घर के जो बहुत सारे संजोग होते हैं, शादियां वगैरह होती हैं, वो भी यहाँ पे बारिशों को देख के की जाती हैं। और क्लियरली जो हमारे मेजर्स हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को भी देखा जाता है। और अगले 1 महीने में तो हम ये देखेंगे कि चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है, कॉमर्स मिनिस्ट्री है, ऑफकोर्स एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, आरबीआई, अपने सभी स्टेट्स में यहाँ पर मानसून को लेकर क्या एक्सपेक्टेशन है, किस तरह की मानसून है, किस तरह की सोइंग है, सारी की सारी जो कॉन्वर्सेशन है वो यहाँ पर हम टर्न होता हुआ देखेंगे। मिस्टर वाधवा, आप हमें पहले भी बता रहे थे कि कैसे सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अब बहुत जल्दी अगले 15-20 दिनों में यहाँ पर मानसून को देखने लगेंगे। डॉक्टर होसालेकर ने कहा ही कि 15 मई को वो ऑनसेट डेट बताएंगे और थोड़ी और डिटेल्स भी हम आता हुआ यहाँ पर देखेंगे, और उसके बाद पूरा नैरेटिव यहाँ पर हम उस तरफ जाता हुआ देखेंगे। कैसे देखते हैं आप इन दैट सेंस, वन, इंपॉर्टेंस ऑफ वेदर, एंड ऑफ कोर्स जैसे कपिल ने कहा कि जब वेदर डेरिवेटिव्स आएंगे वो तब आएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ देयर इज अ ग्रेट वे ऑफ hedging weather via various agricultural commodities that we have on the exchange. So totally agree with you and the discussion. Say commodity derivative definitely provides a useful tool for the value chain participants to manage their risk exposure to unseasonal monsoon or unpredictable weather-related risk, ensuring a stable and predictable supply of agriculture commodities in the market. As Kapil ji was saying, we are in the advanced stage of CETA for discussion of weather contract. And to add to the various use of weather contract, so, weather contracts are available in Chicago Mercantile Exchange, CME. And I was just going through the benefit of weather contract, just to add to the previous participants' comment on this. So weather contracts can be beneficial for variety of industry. For example, agriculture companies can use these contracts to hedge against the financial risk associated with the crop failure due to drought or other extreme weather events. So energy companies can also use the weather contracts to hedge against the financial risks associated with the variation in the energy demand due to weather-related events, such as increased demand for heating and cooling during the extreme temperatures. The tourism industry can also use it and can use these contracts to hedge against the financial risk associated with variation in travel demand due to weather-related event. So it can be used in a various industry and various value chain participants. But the existing contracts are definitely, we are looking for, as Sandeep ji has just mentioned, we need contracts for all the products, all the contracts which were withdrawn, and we are, in talking continuously with the policy maker that we should have all the contracts which were withdrawn also and the new contracts also, and so that again I'll say we're talking about 5 trillion, 7 trillion, 40% will come from these agriculture markets or commodities market. So we need to have all the kind of tools which are there in other jurisdiction, so that we can hedge and make use of it. Absolutely. I actually want to come to each one of you and understand on how we can make use, benefit from the derivative exchange that we have right now and with the availability of commodities that we have right now. Mr. Bajoria, I'll start with you and I'll take a case study from you. I mean, you are an importer, a trader, you deal into the markets here, you understand edible oils very well and various other commodities also. So when you have an exchange and when you understand the weather is going to be erratic, how would you start hedging commodities on that? This is for understanding of our participants. Then I would like to cover some soybean for June to September period for my processing. Because this way, if I have to do an export contract for oil meal and I have to supply oil to Indian markets in the lean season, I must have beans in the hand.
So I will try and buy some soybeans in these months. That is what one thing I will do. At the same time, if Repseed is available, then I would like, if I'm not getting enough soybean in the hand and the mustard crop is good, so and I can't stock my godowns to the full capacity by Repseed, which is available right now in the mandi. But I would like to buy a Repseed mustard seed for next 4 months, and then I would buy on NCDEX for Repseed mustard seed contracts from June to September, October time, so that supply of oilseed ensured to me. I think this is the way we industry as a processors we can look at it. Secondly, as an importer, because if the Indian market is with weather issues there and El Nino probably is there and the crop is going to be less, then I would like to enter into higher import contracts so that my supply chain is maintained. But I cannot just go on buying. If I have to buy 50,000 ton, I cannot hold on 50,000 in position on myself. Then if oil derivatives are showing a good price, then part of that quantity, let's say half of that quantity, 25,000 ton, I would like to hedge on the exchange, NCDEX soy oil, so that my risk is I have a 50,000 ton supply chain maintained, but 25,000 ton at least I have booked my profits by hedging on the exchange in soybean oil in NCDEX. So this is how we can manage. We can cover the oil seeds and probably we can sell the oil which is imported. Looking at Indian situation and maybe the three main states in India, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, if crop is going to be lower and yields are going to be lower. This is how I would typically manage my risk. But without having any oilseed, soya seed or rapeseed contract, or without having soy oil contract on NCDEX, how do I manage my risk? So I cannot establish an import supply chain also. At the same time, I am not sure whether I'll be able to run my plant by locally producing my seeds and exporting the meal. So it's not only my local processing hampers, it hampers my import and export activity also. So that is the problem here right now. And as an Indian consumer, if I have to supply them oil continuously, if I'm able to make a good supply chain in big quantities, the oil will physically move into the country and it will supplement any shortage if it is here. That's how it works. Well, thank you. And we do understand the angst of it because the edible oils, many of them, edible oil seeds for that matter, also are not on the exchange, but the conversation and the work is on, is what we understand. दिलीप जी, ये सवाल आपसे है। जैसे अभी फिलहाल कहा जा रहा है कि मॉनसून नॉर्मल है, एज एन एफपीओ, एज जैसे आपने कहा कि आप प्लेटफॉर्म का यहाँ पर उपयोग करते हैं, डीमैट में भी डालते हैं, हेज भी यहाँ पर आगे जाके करते हैं, तो जिस तरह से एज ऑफ नाउ बताया जा रहा है कि नॉर्मल मॉनसून है, एटलीस्ट द फर्स्ट हाफ इज गुड, अगर एल नीनो में कुछ चिंताएं आती हैं तो वो सेकंड हाफ में शायद आएंगी, जो एज ऑफ नाउ अर्लियर आईएमडी की रिपोर्ट सजेस्ट करती है। ऐसे समय में आप कैसे केस स्टडी समझाएंगे किसी एफपीओ को जो यहाँ पर अब ज्वाइन करना चाहता है या फिर किसी किसान को? वेदर बेस पे तो ज़्यादातर मिक्स क्रॉपिंग ही हम लोग यूज़ करवाते हैं। उसमें ऑयल सीड है, कैस्टर्स है, कॉटन है, ठीक है। तो जितना रिस्क हम लोग कम करवा सकते हैं वो उस हिसाब से मिक्स क्रॉपिंग के हिसाब से ही करते हैं। उसके बाद जैसे जैसे मानसून उनका लाइव देते जाते हैं उस हिसाब से फिर आगे रबी प्लानिंग है, वो पूरा एफपीओ अपने मैन्युअली और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के हिसाब से करवाता है। Mr. Wadhwa, what would you advise somebody who wants to invest, trade in many of these commodities? I mean, we've seen a lot of people actually make use of the platform in that sense as well, hedging or rather investing or working with the futures in way of various agricultural commodities. See, although these platforms are for efficient price discovery and hedging, nothing for investment. But government SEBI has allowed institutional players, these AIFs, mutual funds, so they'll be using these platforms to get the alpha and get the returns out of these markets. So if anyone has to participate for the purpose of investment, he or she, they have to go to these institutions where they can get the yield from these markets. Otherwise, these markets are for hedging purposes and efficient price discovery. As Sandeep ji has just mentioned, for inventory management,
for input cost hedging. These platforms are being used. So I'll say that not other than the precious metal, these markets are for hedging only. Oh, well, absolutely. And that is how we rather see most stakeholders using these markets as well. So whether they are importers, traders, the whole value chain basically needs to be on the platform to be able to hedge the weather risk. And apart from that, various other risks that are associated with them day-to-day businesses there. Kamil, how are you looking at the overall trade right now? I mean, this has been some phenomenal year with the kind of changes that we've done. What is it that you would want to advise participants on when it comes to various commodities, especially the Kharif ones, because that is exactly what the street will be watching out for? नहीं, आई थिंक मनीषा, अभी बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है और एट ए वेरी रेगुलर इंटरवल भी अवेलेबल है। तो आई डोंट थिंक कि वेदर को लेके बहुत बड़ा रिस्क अभी किसी को भी लेना चाहिए, चाहे वो फार्मर हो या प्रोसेसर हो। जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप उसको प्रोसेस करके जहाँ पे भी डेरिवेटिव टूल अवेलेबल हैं या जो जिस तरह की प्लानिंग है आप कर सकते हैं। फार्मर्स को आई थिंक मेरा एक सवाल भी है जो शायद आप पूछेंगे कि फार्मर का डिसीजन किस तरीके से इम्पैक्ट होता है वेदर फोरकास्टिंग के साथ, क्योंकि जब आपके पास सोइंग कर ली तब आपके पास बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप बहुत ज्यादा उसके अंदर ऑल्टर कर सको, एक्सेप्ट आप ऑल्टरनेट इरिगेशन मैनेजमेंट करें या एक्सेस रेनफॉल को मैनेज करें। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो फोरकास्ट हमें बिफोर सोइंग सीजन मिल जाता है उसको फार्मर किस तरीके से प्रोसेस करते हैं और जब वो क्रॉप सिलेक्शन करते हैं तो किस किस चीजों का वो ध्यान रखता है। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है कि जिस क्रॉप का प्राइस सबसे ज्यादा होता है प्रीवियस ईयर में फार्मर उसी को सोइंग करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, जब भी ऐसा हुआ है कि वेदर का थोड़ा कम रहा है, फार्मर ने उसको देखा है कि उसकी शॉर्टेज हुई, प्राइसेस बहुत बढ़े और उसके बाद सभी फार्मर ने एक साथ उस तरह की उस क्रॉप को लगाया और उसकी वजह से प्राइसेस में शार्प करेक्शन हमने होते हुए देखा, चाहे वो पल्सेस हो चाहे वो ऑयल सीड्स हो। और इवन इस बार अगर आप देखेंगे तो मस्टर्ड में भी शायद उसी तरह का सिचुएशन हमने देखा। तो इट्स रबी क्रॉप, बट कहीं ना कहीं वो सब फैक्टर काम करते हैं। तो ये है। और दूसरा जहाँ पे भी जो सेकंड पार्ट है, जो कि प्रोसेसर है या हार्वेस्ट जो उस कमोडिटी को यूज करते हैं, जैसे कि संदीप जी ने भी बोला कि डेरिवेटिव्स जहां जहां पर अवेलेबल हैं, आप जीरा में हमने देखा है वेदर की वजह से किस तरीके से क्रॉप लॉस हुआ और किस तरीके से उसका इम्पैक्ट प्राइसेस पे पड़ा है। ऐसा ही हमने बाकी कुछ और कमोडिटीज में भी देखा है। तो एट द राइट टाइम प्लीज यूज दिस मार्केट्स। बादवा जी ने बोला हेजिंग के लिए बने हैं, तो आप उसको हेजिंग की तरह यूज कीजिए। अदरवाइज जब प्राइसेस एक लेवल पर पहुंच जाएंगे शायद फिर हम इस मार्केट को दूसरे तरीके से देखने लगते हैं और बहुत सारे ब्लेम गेम शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है उसको यूज कीजिए, आपके पास टूल है उससे अपना फाइनेंशियल रिस्क मैनेज कीजिए और कीप ऑन रिव्यूइंग योर एंटायर स्ट्रेटजी एट रेगुलर इंटरवल बेसिस व्हाट IMD एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस आर स्पीकिंग ऑन वेदर्स। वेल एब्सोल्युटली। हमारे साथ काफी सारे पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं इस लाइव वेबिनार के थ्रू। अगर आपके पास कोई भी सवाल है या कोई फीडबैक या कुछ आप कहना चाहते हैं तो अब आप यहाँ पर इसे कह सकते हैं। इन द मीनवाइल डॉक्टर हिसालेकर, दिस क्वेश्चन इज टू यू। जैसे आपने कहा 15 मई को अब यहाँ पर लेटेस्ट फोरकास्ट हम आता हुआ देखेंगे IMD की तरफ से, चाहे वो ऑनसेट को लेकर है या फिर और भी डिटेल्स यहाँ पर आगे जाकर है। जिस तरह का डायनामिक सिनेरियो अब यहाँ पर बना हुआ है, और हम जानते हैं कि मॉनसून शुरू होती है उसके पहले कुछ फार्मर्स यहाँ पर मूंग बोने की भी कोशिश करते हैं, यानी लैंड बहुत देर तक ओपन या बैरन बहुत सारे फार्मर्स यहाँ पर नहीं रखते हैं। और IMD की एक एडवाइजरी भी थी कि एज ऑफ नाउ फार्मर्स को सोइंग ना करें, बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स ना करें, क्योंकि जिस तरह से मौसम यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर यहाँ से 15 मई या 1 जून तक की बात की जाए तो किस तरह का मौसम रह सकता है? Dr. Hasalekar? Dr. Hasalekar, can you hear me? डॉक्टर हसालेकर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? Looks like that's a bit of a miss there. Dr. Hasalekar, can you hear me? ऑलराइट, हम डॉक्टर हसालेकर से यहाँ पर फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। एज ऑफ नाउ उनको मेरी आवाज शायद यहाँ पर नहीं आ रही है। डॉक्टर हसालेकर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन द मीनवाइल अपने कंक्लूडिंग कमेंट्स भी आपसे लेना चाहेंगे। और मिस्टर बजोरिया, आपसे ही शुरुआत यहाँ पर करते हैं।
वेदर काफी एराटिक है, डायनामिक है, और कई सालों के बाद, सेंचुरी के बाद हमने इतनी ज्यादा मूवमेंट यहाँ पर वेदर के लिहाज से आते हुए देखी है। क्या राय देंगे आप जो स्टेक होल्डर्स को, जो यहाँ पर निवेश करना चाहते हैं, जो हेज करना चाहते हैं, कैसे यूज करें इस प्लेटफॉर्म का? मनीषा जी, मेरा hunch ये है कि वेदर जिस तरह का परसेंटेज आईएमडी ने दिया है वो 98 से 102 104 इज कंसिडर्ड नॉर्मल, बट ये इन्होंने 94 से जो दिया है, मुझे नहीं लगता कि वेदर नॉर्मल होने वाला है। एंड ये साल हमें रेडी रहना चाहिए कि थोड़ा एबनॉर्मल वेदर रहेगा और उसको लेके हमें जो डिफिकल्टी होनी है वो होगी, ये समझ के चलना चाहिए। और ये हमारे स्ट्राइड में लेके हमको काम करना चाहिए। तो जैसे एडिबल ऑयल में है, तो एडिबल ऑयल में हम सब प्लेयर्स वही आपस में बात कर रहे हैं कि भाई हमें इंपोर्ट की सप्लाई चेन बना के रखनी पड़ेगी, तो देश में तेल की कोई कमी ना हो एंड कंटिन्यूस सप्लाई बना रहे। यदि हमारा प्रोडक्शन थोड़ा कम होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक प्रिकॉशन हम लेके समझ के चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि हमें यदि खरीफ में थोड़ा कुछ लॉस होगा तो हमें कोशिश करनी है कि रबी में प्रोडक्शन वापस कैसे बढ़ जाए। उसमें हमें जो बेटर वाटर मैनेजमेंट करना है, इरिगेशन फैसिलिटी को यूज़ करना है, वो सब करके रबी में रेपसीड और सरसों की फसल में वापस कैसे बढ़ावा हो, उस पर हमें फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अभी खरीफ फसल में तो थोड़ा हमें प्रॉब्लम हो सकती है, कॉटन में, सोयाबीन में, ग्राउंडनट में, ये हमें समझ के चलना पड़ेगा। और इतने साल हमारे नॉर्मल मानसून चले गए, हमारा गुड लक है, तो ठीक है। उसके बाद एक आध साल थोड़ा डिफिकल्ट आता है, वो भी समझ के चलना चाहिए। लॉ ऑफ एवरेजेस फिर भी हमको फेवर कर रहे हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। और अब अभी हमारा देश सक्षम हो गया है फूड मैनेजमेंट में। हमने, हमारी गवर्नमेंट ने और हमारे देश ने जिस तरह से काम किया है पिछले कोविड के साल और अभी 3 सालों में, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट पॉपुलेशन है 1.42 बिलियन की, उसको भी कहीं फूड की कहीं शॉर्टेज नहीं होने दी। रिजनेबल दाम में सब अनाज, खाने पीने की चीज़ें मिली है और आज भी मिल रही है। तो इसका तो बहुत बड़ा श्रेय इंडिया एज अ कंट्री और हमारी गवर्नमेंट को जाता है कि बहुत अच्छे से मैनेज हुआ। और ये थोड़ा मानसून का भी कुछ होगा तो आई थिंक गवर्नमेंट इज वेरी वेल इक्विप्ड टू हैंडल दिस, और ये हैंडल हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा हमें ग्रोथ रेट पे भी असर पड़ सकता है और ये थोड़ी इस तरह से दिक्कत आ सकती है, लेकिन उसके लिए हम वेल इक्विप्ड है। स्पेशली एडिबल ऑयल सेक्टर में कोई दिक्कत नहीं है, सप्लाई चेन इंपोर्ट की हमारी पूरी अलाइव है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये साल रेपसीड मस्टर्ड सीड का क्रॉप भी बहुत अच्छा हुआ है, तो हमारे पास सीड भी बहुत अवेलेबल है अभी अनक्रश्ड, किसान के पास भी है और इंडस्ट्री के पास भी है, तो वो भी हमें दिक्कत नहीं है। तो क्या हमारा ऑयल सीड ऑयल सेक्टर में काम निकल जाएगा। ऑलराइट, ये एक सेक्टर है जो काफी अच्छे से निकलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जैसे मिस्टर बजोरिया ने शुरू में ही कहा कि प्राइसेस बहुत ऊपर गए और बहुत नीचे आए और इंडस्ट्रीज को बिल्कुल भी यहाँ पर हेज नहीं कर पाई, तो वो ऑफ कोर्स एक यहाँ पर रिक्वेस्ट है रेगुलेटर से टू ब्रिंग द ऑयल सीड्स बैक। लेकिन इसी बीच हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया है, कपिल, इन केस आप इसको लेना चाहें तो। ये मिस्टर दत्ता ने लिखा है, जो कि कह रहे हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द इमर्जिंग ट्रेंड्स और डेवलपमेंट्स that are expected to enhance commodity derivative effectiveness in the weather risk mitigation? Okay. No, I think first of all there are derivatives 3-4 month comfortably आप उसको यूज कर सकते हो अगर आपको लगता है वेदर रिलेटेड है। सेकेंड, इफेक्टिवनेस अगर मैं बोलूँ डेरिवेटिव्स के साथ साथ वेदर का जो प्रेडिक्शन है, जो फोरकास्टिंग है, और जो अभी सबसे शुरू में जो डॉक्टर साहब ने बोला था कि it's important to understand localized weather pattern. As a country it can be normal, but there can be events which can impact localized crop, which can impact some part of the country. उन सब चीजों को भी देखकर I think काफी efficiently derivatives को use किया जा सकता है, depending which side of table you are. Development की अगर हम बात करें तो I think we are in a very advanced stage of having weather derivatives, और rainfall index और मॉनसून इंडेक्स और उसके ऊपर डेरिवेटिव जब एक बार अवेलेबल हो जाएंगे, सो आई थिंक डायरेक्टली भी हम उस डायरेक्शन में जा सकेंगे कि हमें लगता है वेदर की वजह से हमारे बिजनेस को या हमारा जो भी एक्सपोजर है उसको रिस्क है तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग टाइम। हमारा कोशिश यही रहेगा कि जल्दी से जल्दी जब भी एक अप्रूवल जो भी स्टेक होल्डर्स उनसे मिल जाए तो हम उसको एमडी के साथ या बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं बैठकर कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन करें और जल्दी से जल्दी उसको इंट्रोड्यूस करें इंडियन डेरिवेटिव्स मार्केट में। Fair point that. And even as Mr. Bajoria ने exactly समझाया कि if a sector, edible oil sector जिस तरह से है, तो कैसे आप अपना रिस्क मिटिगेट कर सकते हैं
गिविंग वेरियस एग्जांपल कि मैं प्रोसेसर हूं या इंपोर्टर हूं या मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, प्रोक्योरमेंट है, इन्वेंट्री रिस्क है, तो कैसे आप यहाँ पर एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। लेकिन इसी से मिलता जुलता एक सवाल भी हमारे पास आया है जो कि अनिल ने लिखा है। ये कह रहे हैं कि व्हाट आर सम सक्सेसफुल केस स्टडीज और एग्जांपल्स where commodity derivatives have proven to be an effective tool for mitigating the weather related risks। कपिल, इससे भी लेना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, दिस इज ए जब 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 भी वेदर की फोरकास्ट हुई है और जब भी हमने देखा है कि उसका इम्पैक्ट क्रॉप पे पड़ा है, हमने देखा है प्राइसेस ने एडवर्सली मूव किया है, यानी कि ऊपर के साइड में मूव किया है। और अगर आप कभी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब सोयाबीन का लास्ट ईयर लेस प्रोडक्शन था या पल्सेस का लेस प्रोडक्शन था बिकॉज ऑफ adverse weather situation, we have seen prices moving up in case of soybean from 40 to maybe let's say 100 rupees, chana prices moving from 30 to 60, and derivatives are not a very complex tool। सीजन में अगर मार्केट 30 रुपए शुरू हुआ है और 6 महीने के बाद अगर वो 60 रुपए गया है, और अगर आप एज ए प्रोसेसर उस प्राइस मूवमेंट के लिए एक्सपोज्ड है, अगर आपने हेज किया होता तो शायद आप 30 रुपए में वो चना खरीद रहे होते जब वो 60 रुपए में था। और अगर मैं सोयाबीन का करूं तो हमारे पास केस स्टडीज है कि जिस टाइम पे सोयाबीन का सीजन शुरू हुआ था 2021 में, जब सबसे ज्यादा हमने प्राइसेस मूव होते हुए देखे थे सोयाबीन के, अगर किसी ने हेज किया होता और जो कैरी है उसको पे करके वो 6 महीने या 8 महीने अपनी पोजीशन को अपनी फिजिकल रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट में हेज करते, तो शायद वो सोयाबीन 4,000 रुपए में खरीद रहे होते जब फिजिकल मार्केट 10,000 रुपए ट्रेड कर रहा था। और ये सब एक्चुअल जो प्राइस डेटा है हमारे पास उसके बेसिस पे है। सो आई थिंक देयर इज नो केस स्टडी रिक्वायर्ड। जब हमें पता है कि वेदर इज नॉट गुड and expected impact on the prices, we know if it's really very good, we can see prices getting relaxed from where they are at this point of time because excess supply होगा। और जब हमें लगता है वेदर वीक है या कहीं पे लोकलाइज्ड किसी पर्टिकुलर क्रॉप को लेके वेदर का इश्यूज है, prices will behave differently and we can take a call to manage that price risk। So I think in both the situation we have seen that's happening। मस्टर्ड में हमने देखा है बिकॉज ऑफ ऑल द फेवरेबल सिचुएशन, प्राइस फेवरेबल, वेदर फेवरेबल, we are sitting on the largest ever crop and there is a huge carry, prices have corrected from 8,000 level to now 5,000 kind of thing, and that's a risk to all the producers who are producing mustards and maybe people who are having inventories। So prices have corrected। If there was a derivatives contract, I think that could have been used very efficiently for managing price risk। All right. And we have one more question, and this one is from Vishal, who says, how have advancements in technology and data analytics improved the effectiveness of commodity derivatives as a hedge against weather risk? Mr. Kapil, would you want to take this as well? Or Mr. Wadhwa, do you want to take this? I think Kapil can take it better than me. All right. No, I think that any technology helps। अभी हम एक नॉर्मल वेदर फोरकास्टिंग से सैटेलाइट बेस इमेजरी उन सब लेवल पे पहुंच गए, तो हमारे पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। वी कैन एनालाइज इंफॉर्मेशन विच इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। वी कैन एनालाइज a small crop among all the crops using satellite things। We have all the data, we can use that with all the data analytics and AI based tools, and many of the people have now started using AI based data forecasting, weather forecasting, and using in their tools। Look, whatever we do have, ultimately one thing we want to arrive as far as agriculture is concerned, क्या प्रोडक्शन रहेगा, क्या प्रोडक्टिविटी रहेगी। तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन यूज करके उसको अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाए, फोरकास्ट कर पाए और फिर उसको डेरिवेटिव से मैनेज कर पाए, आई थिंक नथिंग बेटर देन दैट। वी यूजुअली डोंट फॉलो IMD, बट अगर आप देखेंगे IMD के अलावा भी नाउ देयर आर वेरियस अदर informations available on weathers, and they are being used commercially, being sold in the ecosystem। There are many buyers who are buying those kind of informations and using those data for efficient prediction and then using derivatives to use that information। All right, Mr. Wadhwa, आपसे भी एक फाइनल वर्ड यहाँ पर लेना चाहेंगे। क्या सजेस्ट करेंगे आप people who are mitigating risk, weather risk that is, by using the platform? See, definitely when the weather contracts are there, they'll be using it much more efficiently। So hedging का सबसे बड़ा टूल ये होता है कि
इट हैज टू बी क्लोज, प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए उस कॉन्ट्रैक्ट की आपकी प्रोड्यूस से या अंडरलाइन की, तभी आप उसको यूज कर सकोगे। तो मानसून या वेदर को हम बहुत अच्छी तरह से हेज कर पाएंगे अगर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, बट जब तक वो नहीं आते जो हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं, ये बहुत अच्छा आप प्रोग्राम कर रहे हैं अवेयरनेस का, जिससे कि लोग एफपीओज आएंगी उसको समझेंगी और हेज कर पाएंगी। बट मार्केट को बहुत यूज करने की जरूरत है हेजिंग के लिए, ये मेरा मानना है, और सबको इसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए। थैंक यू। जी हाँ, एब्सोल्युटली एक बहुत अच्छा मौका है। जब तक हमारे पास वेदर फ्यूचर्स नहीं आते, वेदर इंडेक्स नहीं आता, तब तक हम यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज के थ्रू भी इसे कर सकते हैं। और जैसे कहा भी गया कि वेदर अगर बहुत अच्छा है तो हम देखते हैं कि सेंटिमेंट इंप्रूव हो जाता है और काफी सारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज के ऊपर से जो एक डर है, थ्रेट है, अनसर्टनिटी है, वो हट जाती है, प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। तो काफी सारी केस स्टडीज भी हमने पिछले 1 घंटे में यहाँ पर डिस्कस करी है कि कैसे आप इसका यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। पर एक फाइनल कंक्लूडिंग कमेंट्स यहाँ पर डॉक्टर होसालीकर से भी लेना चाहेंगे। Doctor, you set the context for this conversation, and this is one area that we will continue to watch for the next 4 and 5 months. Actually, we've been watching everything that IMD has been saying for the last 4 months now, which we normally don't do because सीधा ध्यान यहाँ पर मॉनसून पे जाता है, जो इस बार आपने बिल्कुल होने नहीं दिया। लगातार आपकी बातें हम यहाँ पर सुनते रहे हैं। आपके कंक्लूडिंग कमेंट्स यहाँ पर क्या होंगे? क्या कुछ अब आगे यहाँ पर वॉच करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए? Yeah, thank you, Dr. Manisha. I was a bit disconnected in between because of some technical issue. मैं चाहता हूँ कि now the technology has advanced to a great extent, and we are able to harp on it. We are able to take that technology, and there is no compromise as well as the global technologies are concerned. We are at par it because the data whatever we take from Indian context, it goes into the global model and it is accepted also. So many times people have fear that that the instrument or the forecasting or the probability is not meeting the required level. No, it is not like that. That is one part. Somebody asked me what are the improvement. For example, the improvement, I'll just say, suppose you are going to have the heat waves, I am able to give the forecast accuracy more than 70 to 80% at the level of what would be the heat wave next 3 to 4 days. Probably this improves a lot of sectors like health sector, water sector, the construction sector, the markets, the commodities, the agriculture, and whatnot. Probably one of my colleague on the was mentioning about the different parameters on which the weather commodity could be based. Probably, I think if we start working on it, I feel that there is no commodity which would not be depending on currently. Even the mood swings nowadays, our not only the physical health but the mental health also. बहुत ज़्यादा धूप है तो probably you and me will get irritated also. So this can happen and this can disturb our office working also. So probably it goes in all the sectors in a very deep rooted. So what I request all my people here, that please watch the weather updates. Number one, because they are not only affecting the general in general, but they are affecting your own performance, your own health, your own family, your own well-being, your own business, your own economy, and whatnot. Even your travel plan, somebody was mentioning that even travel plan can get disturbed if you are not very sure about what could be the weather. So I would request all my colleagues here. This is a good opportunity that you have invited me here. So it's an opportunity that not only you look at the monsoon, but pre-monsoon shower, the lightning. Probably it's one of the major hazard where a lot of people they die, a lot of livestock of the farmers they go away. I think this is something which we need to have a little more advocacy, and I'm sure I'm really very happy that NCDEX could has invited me on this very large forum to discuss about it. I would say, please, the climate change is not for the future; it is happening. Monsoon is not for the future. Already rains are coming up, but they are not monsoon rain. But definitely, we will work together and we will have more closer interaction. Any question, any forecast goes wrong, definitely you can call us and tell us that why this happened. And probably when it goes right, I'm sure you'll also appreciate that whenever the forecast goes correct also. So this is my word, that keep watching, and keep watching the weather updates. Thank you, Manisha. Thank you, Dr. Hosalekar. You have no idea how much of weather news that we are watching right now. And as rightly said, it's not just about the crop patterns and designs there, but yeah, mood, shadiyan, travel plans, for everything. Yes, we will keep an eye on you that one.
But thank you so much, gentlemen. Thank you so much, participants and audience as well, for staying by and listening through to this conversation, which has been very interesting, exciting, and interesting to understand on how weather and how to watch it to begin with, and how it can be used in ensuring that you can hedge your agriculture and your economic indicators on the platform here. Thanks once again. And with that, that's all the time we have on this one. Thank you. NCDEX presents Commodity Ki Paathshala, powered by Moneycontrol.